our full attention and presence. So, ma'am, you can start talking now. Thank you so much. Thank you, Zainab. You're welcome. All right. All right. Um, can you see the screen? Is it visible to everyone? Yes, it is. All Uh, right. So, oh, sorry. just one more Zainab, thing. what? Yeah. Yes. So, actually, I think we can see your notes as well. Oh, okay. Just a second. One second. Can you just give me a second? I'm so sorry. That's totally all right. Uh, Just hold on for a second, okay? yeah. It's good to see uh names that are there each day, and I think these are the names that join early for the guest speaker session every day. Iman, Mahizara, Iram, Aiza, Rubab, and Muhammad. Walaikum Assalam, Iram. Yes, ma'am, we can see it and we cannot see your notes now. Okay. So, Zainab, are we good now? Can you see my screen? Yes, yes. All right. And Thank you so much. All right. I'm so sorry for the loss of time. Anyway, so welcome everyone. Assalamu alaikum. The topic that we're going to be discussing today is raising resilient children. So, basically, the importance of boundaries, consequences, and self aware parenting. We'll be exploring how boundaries, consequences, and awareness can help us raise emotionally resilient children. The thing is not about being perfect, it's basically about being intentional, present, and consistent in our parenting. These are the four major topics that we're going to be discussing: setting boundaries, applying thoughtful consequences, consistent communication, and self aware parenting. All right, so first of all, I would like to ask you, can anybody tell me what is parenting? All right, no one? All right, so then maybe I can try. tell me, what do you understand from the term parenting? I think parenting means, how you do the upbringing of your child. Mm-hmm. That's It includes everything, you know, in that very true. process. That is very true. That is very true. Um, well, I believe that the greatest guilt that a parent should carry is not the lack of time or material possessions given to their children, but the failure to truly parent them. So, but what is it that parenting basically entails? According to Piaget, parenting is the process by which children are given the values and social norms that will enable them to live appropriately in society. So basically, setting boundaries, imparting societal norms, reinforcing familial principles, these are not things which are optional. Just like
You have to feed a child, you have to, take them to the toilet, you have to clean them up. Just like that, these things are also not optional. These are the essential responsibilities of parenting. Now, because parenting basically goes beyond presence or provision, it is, it is the active process of teaching, guiding, instilling values. Now, when we talk about parenting, so there's certain types of parentings that I have come up with basically. So we're going to start discussing them. Um, if anybody else would like to answer, otherwise, Zainab, would you like to answer? That what do you think? What do you understand from the first one, which says aware and prepared parenting? Okay, from what I understand, I think it's they know how they want their child, in what environment they want their child to grow in, what Mm-hmm. values they want them to teach, and I think that's what it means. All right, that's a good answer actually. By the aware and prepared parent, this is the first type, and what we mean by it is these are the ones who set very clear strategies and boundaries for their children. They have a system in place. These are the mindful parents who know what is the system that they've created for the child. They know what boundaries are. They have given a clarity to the children, and they also know when those boundaries are crossed and what are the consequences that their children are going to face. Right? Now, the second type are called aware and ad hoc parents. Now, these are the ones who react in the moment, meaning like they react on the go. It means that, like, for example, they don't know what to do when a boundary is crossed. They will think at that particular moment, what am I supposed to do now? What am I going to do? Now, this boundary has been crossed. Now they think and they decide at the spur of the moment, what am I going to do? So their reactions are not set beforehand. Nothing is set beforehand. They do know what boundaries are and when they are crossed, but they don't know what to do about them. Now, the third type are the fluctuating types. Now, the these are the most inconsistent parents. Okay, these are the parents who actually cause confusions in the minds of their children. How these parents, um, what I understand is that there are two types of fluctuating parents. So one are those who who say, all right, so the boundary is broken, and they say, all right, not today, I'm too tired, or I'm too exhausted, or I'm too sleepy, I don't want to get into this battle today. To get those kinds who are inconsistent, they don't follow the rules, meaning they make the rule, they have rules, but they don't follow them. The other type is the ones who actually they they don't choose to overlook, but they're kind of like unaware parents. They don't know when the alarm has gone off, meaning they didn't hear it, so they wouldn't react because they didn't get to know that a boundary was crossed. So how would they react to it? From a child's perspective, what happens is that both of these types seem the same to the child because the child is unaware whether the parent is going to react today or not going to react today. So, am I going to be in trouble today for what I've done, or I wouldn't be? It's all pure luck. So, this kind of a child basically is going to be a very confused kind of a child who wouldn't know when his or her parent is going to react or not react. The fourth type of parents, these are the mindless parents. The mindless parents lack awareness or enforcement of boundaries, meaning either to leading to unchecked behaviors, which means that in uh, in this case, boundaries were either never created, or if they were created, they were never enforced. Okay, so for example, sometimes what we see is there are children who are hitting their parents, and the parents really don't heed it at all, or the children are writing on the walls, and the parents really don't care, or they don't get to know about it. So these are the mindless parents, basically. Now, coming to the important point that we, as earlier we had, that we're going to be discussing 4 points. So, one of the basic points is why boundaries matter. Actually, children and adults alike. By the way, what do you understand from boundaries? What do you think boundaries are?
I think it would be me again. Sorry, say it again. I I think it would be me again answering because nobody else is Okay, answering. yes, absolutely. No worries. Yeah. So I think boundaries, because in this world there are a lot of things that we can do, but some things are not good for us, and some things, have a negative effect on us. So we set boundaries, Okay. in order to differentiate between good or bad, or, in extreme behavior sometimes. Good. So I think that is called boundaries. Very good. Very good. All right. Basically, children as well as adults. All right. So everybody has a set of emotions, as we are all aware. Okay, everybody has emotions. Some have big emotions. Some have small emotions. Nonetheless, every person experiences emotions. Boundaries basically help us regulate these emotions. All right. They guide us how to express them appropriately, hold them back when necessary. This regulation basically is necessary for our own safety as well as the well-being of others. Right? It protects both ways. What are boundaries? Boundaries basically, uh, think of boundaries as a dam. All right. So what does a dam do? Dam is basically holding back water that doesn't flood. It's water is allowed to come in when necessary, and the amount is also controlled. All right. So boundaries are basically like a dam. They don't eliminate the flow of emotion. They contain it and they direct it. All right, preventing emotional overflow that could cause harm. So when children basically start understanding what is allowed and what is not allowed, okay, so that basically lays the foundation for a very healthy and respectful relationship all throughout their life. It isn't, obviously they wouldn't be staying in the relationship, would always not be just a child and a parent. Whatever relationship they go into, those setting of those boundaries at an early age basically helps them throughout their lives. Because what do the boundaries do? They create predictable environment where children feel safe, and that sense of safety helps them in their emotional well-being. Clarity of limits give them give them direction. All right, and it helps them build self-control and understand what kind of behavior is okay and what kind of behavior is not okay. And when there are clear boundaries set by parents or adults, children understand that rules exist. They don't exist to control them, but they exist to protect them. Right? That is an understanding that develops over time when there are consistent boundaries set for children. So when you follow through calmly as an adult, what happens is the children learn to respect authority as well. All right, and respect grows when parents are firm, but they're also kind at the same time. So children know that the parents love them. They're firm because consistency is required. All right. Now, there are types of boundaries. So, there are different types of boundaries. There are four different types of boundaries that are outlined over here. So, physical boundary basically entails it protects personal space. All right. So, for example, again, Zainab. So, what do you think is the example of physical boundary? So, it basically helps protect your personal space. So, what can be the example of physical boundary? Uh, I'm thinking, All right. let's ask others as well. All Please, right. if I somebody wants to answer, please unmute yourself. You can definitely, it's a great opportunity to learn as well, and, to show that you can do things as well. So please try to Please participate. don't shy away. Just say whatever comes to mind. It doesn't matter whether it's right or wrong. There are no judgments over here. They want you to repeat the question. All right. So the question is basically physical boundary. Physical boundary basically means, physical boundaries protect personal space. So, for example, safe spaces, personal space, physical safety rules. These are examples of these are physical boundaries. Can you give me a live example of physical boundaries? So
Isa, do you Right. want? I'll give you a first example, then let's see if anybody else can come up. For example, Ma'am, may I answer this yes, question? please. Please do. Yes, please. Uh, Please, please unmute yourself and then speak. Enter someone rooms without knocking. Very good. Very good. If you're entering the room, please knock before coming. All right. That's a very good example of a physical boundary. Or, you know, no touching. That's a physical, no? Physically touch. Do not touch. All right. Even if you're angry, don't touch. That's a physical boundary. Now, emotional boundaries basically help manage feelings. Okay. For example, it's okay to feel sad. Okay, it's okay to feel angry, but it's not okay to hurt others when you do feel angry. That might include emotional outbursts with shouting or yelling or throwing things, or any of those things might be. This is all considered as part of emotional boundary. The third type of boundary is time and space boundary. Time and space boundary, as the name suggests, is, for example, screen time ends at 7 p.m. Okay? It should mean 7 p.m. So that's time and space boundary. Quiet time after 9 p.m. So quiet time after 9 p.m. That's time and space boundary. Now, the fourth type is the behavioral expectation. These basically guide you towards, what kind of conduct is appropriate. So for example, we speak kindly in this house. Okay. Or when you take off your clothes, you throw them in the laundry bin. You don't throw them on the floor. That's a behavioral expectation. You put your toys away after you've played with them. This is a behavioral expectation. All right. Then, now, so this was, till here we've discussed the types of boundaries, and we've also discussed why boundaries matter. All right. Now is consequences. So, what do you understand from consequences? Please unmute yourself and tell me, what do you understand from consequences and how it is linked to boundaries? uh, please unmute yourself. Isa, do you want to answer? Anything. You can answer anything. I think she unmuted and then she muted again. You can unmute yourself, Isa. मैम क्रिटिकल रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इन लर्निंग को लिंक करना है हम लोगों ने. Sure. Sure. मैम कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखा जाए बाउंड्रीज के साथ, अगर आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं. बिल्कुल. मैम तो फिर कॉन्सिक्वेंस कहेंगे किस चीज को? Isa, you can try. I mean, I'm sure you will be right. There is no wrong answer. मैम मुझे आंसर आ रहा है बट मैं उसको लिंक नहीं कर पा रही. अच्छा, कोई मसला नहीं है. आपके ख्याल में आप मुझे ये आंसर बताइए कि अगर बाउंड्री टूट जाएगी, अगर बाउंड्री तोड़ देता है बच्चा, तो क्या रिजल्ट होगा? जी. उसको क्या कहेंगे? अगर वो कोई बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहा है तो मैम वो अपने उन रूल्स को ब्रेक कर रहा है ना. रूल्स को ब्रेक कर रहा है ना, तो उसका क्या नतीजा होगा? इसका उसकी पर्सनैलिटी पे बुरा इफेक्ट आ सकता है. बिल्कुल. बट वो जो क्योंकि वो वेल डिसिप्लिन नहीं होगा, इमोशनल रेजिलियंस नहीं होगी उसकी. एब्सोल्युटली. जब इज़ा, राइट? यस मैम. ऑलराइट. सो इज़ा, बेसिकली जब बाउंड्री तोड़ता है ना बच्चा, या बाउंड्री को क्रॉस करता है ना, तो उस बाउंड्री को जब ब्रेक करता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, उसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं. ठीक है. जो उसका रिजल्ट होना चाहिए उसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं कि अब क्या होगा. ऑलराइट.
और जो अवेयर पेरेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट वाला हमने टाइप ऑफ पेरेंट पढ़ा था, अवेयर पेरेंट, वो अवेयर पेरेंट के पास एक सिस्टम बना हुआ होता है, डेवलप्ड होता है। वो लोग एक सिस्टम डेवलप कर चुके होते हैं पहले से एज अवेयर पेरेंट्स, कि जब हमारा बच्चा ये हमारी ये बाउंड्रीज हैं जो हमने अपने बच्चे के लिए सेट की हुई है, बच्चों के लिए सेट की हुई है, और जब ये वाली बाउंड्रीज तोड़ी जाएंगी, बच्चा अगर तोड़ देता है या क्रॉस कर लेता है फॉर एनी रीजन, गलती से या पर्पसफुली, आइदर वे, तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। उनको पहले से पता होता है, एक सिस्टम इन प्लेस है, बाउंड्री टूटती है, अलार्म बजता है, अलार्म बजेगा, पेरेंट ने ये कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल आग लगती है तो एक अलार्म बजता है, राइट, अलार्म बज जाता है, फायर अलार्म। अब जब फायर का अलार्म बजे तो किसी को यही ना पता कि आप करना क्या है, ऑलराइट। सो वो जो है ना कि पता ही नहीं है कि क्या करना है, दैट इज बेसिकली जो हमने अभी ये जब पता ही नहीं है कि क्या करना है, दैट मीन्स के द पेरेंट इज नॉट अवेयर कि उसने व्हाट इट इज दैट द पेरेंट, उसने अपने बच्चे के लिए क्या किया है, वो आखिरी वक्त के ऊपर सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब आग लग गई है, अब करना क्या है, पहले से नहीं पता, देयर इज नो ट्रेनिंग, नो नथिंग। सो पेरेंटिंग जो है ना, उस पर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट रेजिलिएंट चिल्ड्रन। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अवेयर पेरेंट हो, एक माइंडफुल पेरेंट हो, उसने ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंसेस हर जगह पे होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने भी जो दुनिया और कायनात क्रिएट की है, उसके अंदर देयर आर लॉज, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस एवरीवेयर। आप हर चीज को देखते हैं, आप साइंस को देखें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, आप दरख्त काटते हैं, यू कट डाउन ट्रीज, क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाती है। आप पानी के अंदर पोल्यूशन मतलब पोल्यूट करते हैं वाटर को, तो क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर इतने सारे हेल्थ हैजर्ड्स पैदा हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, मछलियां मरने लगती हैं, टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्या होता है। कायनात के अंदर कहीं पे एस्ट्रोनॉमर्स आपको बताते हैं कि एक सितारा जो है वो, एक छोटा सा सितारा अगर कोलैप्स कर जाता है तो पूरे यूनिवर्स में रिपल्स फैलते हैं। So consequences are everywhere, ठीक है। The nature shows us, the nature teaches us कि there have to be consequences of everything, everything। वो जो बात है ना कि cause and effect, अल्लाह ताला ने सूरह शुरा में 42:30 में अल्लाह ताला has said that and whatever strikes you of disaster, it is for what your hands have earned. Likewise सूरह रूम में है 30-41 के अंदर, corruption has appeared throughout the land and sea by reason of what the hands of the people have earned, ठीक है। So this is basically telling us कि जो भी चीज, जो भी एक्शन होता है, वो किसी ना किसी, उसका कोई ना कोई, there's a consequence to it, ठीक है। But what does it entail in parenting? So in parenting what happens is if we fail to set consequences for our children's actions, we're basically not parenting them for the reality of this world they live in, okay? We are not parenting them, we're just passively allowing them to wander through life without awareness of limits, without inculcating responsibility, without any accountability, और वो बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता। When a child does something wrong and there are no consequences, they learn that wrong and right are meaningless। देखिए आप बच्चे के लिए तो कोई मायने ही नहीं रहा ना, जब आप, वो बच्चा कुछ भी कर देता है, वो दीवारों पे लकीरें बना रहा है, या किसी को मार रहा है, या चीजें फेंक रहा है, या चीख रहा है, और आप उसके ऊपर उसको कुछ भी नहीं, उसके कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई उसकी कोई कॉन्सिक्वेंस आपने नहीं लगाया, तो क्या हुआ, बच्चे को तो पता ही नहीं लगा कि इसमें से गलत क्या चीज है और सही क्या चीज है, ठीक है। So they don't learn self-discipline, they don't learn to respect the rights and boundaries of others। अपनी चीज तो अलग हो, किसी और की भी वो नहीं सीखता। So in short, basically what consequences teaches us is the choices matter, ठीक है। This is our choice, if I'm going to draw lines on the wall, this is a choice that a child has made, ठीक है। But what happens in reaction to is what is important. Actions affect others and accountability is real। So these are things that, and when delivered with love and fairness, consequences help children grow into grounded and responsible adults। Sorry.
All right, so मैम इस चीज को हम इसके साथ लिंक आउट कर सकते हैं, जैसे एक बच्चा है, वो पहली दफा झूठ बोलता है तो उसके पेरेंट्स उसके सेक्शन पे उसको कुछ भी नहीं कहते, देन वो absolutely भी हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उनमें फिर से वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, और लास्ट पे आके जब वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वो कोई भी चीज मेंटेन नहीं कर पाता, तो जब तक हम बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे लास्ट में हमें उसके यही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली यही बात है, एग्जैक्टली यही बात है। सो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस ना और टू टाइप्स, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है, एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि जो नेचुरली, मतलब आपको कोई इंसान नहीं सिखा रहा, खुद ब खुद आप नेचुरली सीखते हैं। देखिए ना, अब आपका पेरेंट नहीं सिखा रहा, बट आप naturally somehow or the other you are learning through your own experiences, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दी कि आपने खुद ही आप भूल गए लंच लाना, तब आप हंगर है ना, तो वो आपको उसने सिखाया कि ऑल राइट, ये आपका कॉन्सिक्वेंस था कि आप हंग्री फील किया, अब नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर टू डू इट। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस वो होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है, आपका पेरेंट आपको सिखा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस एंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू डू द एग्जांपल्स ऑफ consequences. Up here, I would like to have a little bit of input. मैंने ये एक interactive बनाया था. If I would like to have all of you, please unmute yourselves, and if you can answer. Okay, for example, if a child refuses to eat dinner, so what will be the natural consequence of it, and what will be the logical consequence of it? If you can answer. Otherwise, I'll just quickly go through the slideshow. I think for one action, people can answer, but if you can be a little bit quick after that. Sure thing, I can do that for you. No worries. If you want me to wind up, can you just tell me how many minutes? I can be quick. All right. Actually, 5 or 10 maximum. ठीक है, I'll just quickly go through this, ठीक है? If you all can please mute yourselves. I don't know. Please, Mohammed, please mute Can you yourself. please I'm mute unable. yourselves, please? Let me mute them, ma'am. Just All give me. right, thank you very much. Somehow I'm not able to do that. Okay. मैम may I answer this question? I can answer this question if nobody Yes, else is. please. So All for right. example, if a child refuses to eat dinner, the natural consequence will be he or she will feel hungry. Absolutely. Okay? And the logical consequence is going to be that, you know, the parent does not offer any snacks in between, but the parent makes the child wait till the next snack in order to make the child realize that they have to, you know, eat their dinner. These are some of the examples of consequences that I mentioned over here in order for you to understand what what consequences are. I would also like to tell you this, कि a mindful parent, what they will do is, for example, if you tell a child to sit down and drink milk, but the child doesn't, all right, and the child gets up and they go and they fall down and they break the glass and the milk spills. Now, what a mindful parent would be doing, and the kind of parent, an aware parent will be doing, is that they will not shout over here and they will not scream over here. What they will do is they are going to sit down with their child, and they will, whether the child starts crying or they don't start crying, irrespective, they're going to sit down with the child and they're going to help the child clean up the mess. And this is going to be teaching, and that time they're going to tell the child that we should sit and we should not walk when we are drinking or eating. Here the parent is basically taking out time to help the child understand mess is okay and mistakes are okay, but this is what we do. All right? A mindless parent over here
might not even understand what's going on. All right, and their children might just be, they would either start crying because the milk has spilled and they're unhappy about the fact that they don't have a milk in the glass anymore, but the parent doesn't realize that the glass has broken, and that is something that is important, and the child should have a consequence over here. Or the child might just, run off. Fluctuating parent over here, what they would do is they would either yell at the child, or they might ask the child to clean up, or they might just let the child run off and not say anything at all, because the fluctuating parent does not know, is inconsistent, and they would sometimes show one reaction, sometimes another reaction. They would not know. The aware and ad hoc parent over here would try to figure out, what should I do now? वो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो सोच रहा होगा कि अब ग्लास टूट गया, तब मैंने करना क्या है, बच्चे को डांटना है या नहीं डांटना, या कुछ कहना है या नहीं करना। वो उस वक्त आखिरी वक्त पे सोच रहा होगा। ठीक है, देन सो बिकॉज आई बीन आस्क्ड टू हरी अप, सो आई विल जस्ट गो ऑन। Now the most important thing that to remember is कि no matter what it is in life, the most important and the key to everything is consistency. जो हमने बात की ना कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा कंफ्यूज्ड होगा और जो हार्म होगा, जो सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर सकेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो बच्चा होगा जिसका पेरेंट फ्लक्चुएटिंग पेरेंट है, विच मीन्स एन इनकंसिस्टेंट पेरेंट। सो बेसिकली जो कंसिस्टेंसी होती है, जो रूटीन्स होते हैं, आपने बहुत थोड़ी सी बाउंड्री सेट की, थोड़ी सी रूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन आप उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करा रहे हैं, तो you will end up in a resilient child, in a child who's emotionally regulated, in a child who understands, self-regulated child basically. So some of the examples of inconsistent parents and how it would be harmful is, for example, if you keep on changing the rules based on your mood. आपका बच्चे का टाइम है सोने का 8 बजे, लेकिन आप कभी 10 बजे सुलाते हैं, कभी 11 बजे सोने देते हैं क्योंकि आप थके हुए हैं, या आपका दिल नहीं चाह रहा, या आप ड्रामा देख रहे हैं, या तो बच्चा जो है वो तो कंफ्यूज होता है। या फॉर एग्जांपल आप इग्नोर कर देते हैं मिसबिहेवियर, कभी आप इग्नोर कर देते हैं, कभी आप नहीं करते हैं, कभी आप वो बच्चा जो है वो ओवरलुकिंग, हिटिंग व्हेन बिजी, पनिशिंग इट, मतलब आप कभी उसको उस बात पे पनिश कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी कह रहे हैं, कभी नहीं कह रहे, तो उससे क्या होगा कि बच्चा तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि रूल्स फॉलो करने भी हैं या नहीं करने हैं। Giving mixed messages, for example, telling the child not to yell, but you yourself yelling. For example, threatening to remove the screen time, but not doing it. आप कहे जा रहे हैं, but असल में तो नहीं कर रहे, तो ये inconsistent है. For example, unequal treatment between siblings. All right, so this is also something very important when there are two siblings, or there are two people or whatever. आप एक को पनिश कर रहे हैं, एक को पनिश नहीं कर रहे उसी बात के ऊपर, तो इससे भी बच्चे के अंदर एक्सट्रीम रिजेंटमेंट भी पैदा होता है, और उसको समझ भी नहीं आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड व्हाई इज दिस। फिर उसको लगता है जैसे द वर्ल्ड इज अनफेयर। लाइकवाइज आप कभी गुस्से में हैं, कभी आप काम है, कभी आप हंस देते हैं, कभी नहीं करते। So what happens is, what consistency basically does is कि it helps reduce the anxiety and confusion in children. तो इसकी वजह से जब आप consistent routines होते हैं, उससे एक stable environment produce होता है, और उससे what does it do? It basically promotes emotional well-being and encourages positive behavior, making it easier for children to thrive. All right, so establishing effective routines for stability, basically such as regular meals and bedtime, providing daily structure. These routines basically also support children's development of self-regulation and emotional control, which are vital skills for resilience. Now, the key to setting boundaries as well as having consequences and everything is effective communication. Okay, effective communication basically involves staying calm and teaching the children between right and wrong in a supportive way. जैसे मैंने आपको example दी spilt milk की. This approach basically helps maintain a positive learning environment and encourages children to internalize important values. So how the parent communicates to the child has a direct impact on what the child and how the child learns. And calm and clear communication, जो clarity है ना कि this is what I expect from you, this is what is expected, and consistently that is the same expectation. That is what sets basically उसके अंदर एक
आपकी एक स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है बच्चे के लिए, जहाँ पे वो अपनी चाइल्डहुड के अंदर जब उसके लर्निंग ईयर्स हैं तब वो राइट एंड रॉन्ग पे डिफ्रेंशिएट करना सीखता है। और इसी क्लैरिटी की वजह से बच्चे जो हैं वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी लर्न करते हैं, एंड दे ऑल्सो लर्न डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, व्हाट डज द पेरेंट एक्सपेक्ट? Again, clear rules, clear home rules, and consistent boundaries is what helps the child understand its importance as well and develops trust in their caregivers. Raising voices is never a good idea. Okay, so we have to be, the parent needs to be consistent, and the parent needs to be calm whenever there is a situation, whenever there's a boundary broken, and before that as well, while giving instructions, and in case that a boundary is broken, the parent needs to remain calm. So again, the same thing, they need to, whether it's an accident, चाहे जानबूझ के किया हो बच्चे ने या गलती से कोई चीज हो गई हो, either way, important thing is कि you have to be compassionate, you have to be firm in what? Firm होना है आपने कॉन्सिक्वेंस इम्प्लीमेंट करने में, कि आप भूल ना जाएं कि बाउंड्री ब्रेक हुई है तो कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए बच्चे को, लेकिन at the same time you have to be very compassionate, you have to be very gentle as well. Self-aware parenting, which was the last point. Self-aware parenting basically involves recognizing and managing your own emotions and reactions. This awareness allows parents to respond thoughtfully to their children, modeling emotional strength and resilience that children can learn from. If they don't know themselves, so basically to understand, for a parent to understand Hello. themselves. Yes, please. Yes, please. I'm not sure who that person was, but I think Okay. they have muted themselves again. All right. All right. So this is the last point. We'll be quick with it. Uh, a self-aware parent basically is able to reflect and identify what they are feeling. Okay, so you need to know what you are feeling and if what is triggering your anxieties. That is what the parent needs to be self-aware. Understanding these feelings basically will help you prevent overreactions. ठीक है, आपके अपने इमोशनल जो डैम फट जाता है ना और पानी फ्लड कर देता है, आप जब, when a parent is going to be self-aware, and when the parent, and even if a parent thinks that they can't do it, there is not a human being who cannot not do anything. Whatever you put your mind to, और जब आप parent बन जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है, it's an automatic process. You will, if you put your mind to it, you will understand. So when you start understanding and focusing, I have to become a self-aware parent, helps. What does it do? It helps promote healthier relationships and emotional stability, both for parents as well as for children. पेरेंट को, जब पेरेंट इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, नो व्हेन योर रिएक्शन इज अबाउट यू एंड नॉट अबाउट योर चाइल्ड. ठीक है, एंड ऑल्सो जब पेरेंट ये वे करना शुरू कर देता है कि इज दिस अ रैशनल कंसर्न और इज दिस जस्ट एन इरैशनल फियर ऑफ माइंड, and when they're able to weigh and see how big the problem is and make decisions accordingly. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पेरेंट्स होते हैं कहते हैं ग्रास में मत जाएं, इंसेक्ट बाइट कर लेगा, या यू नो, या आप सीढ़ियों पे मत जाएं, आप गिर जाएंगे. जब आप बच्चे को बार बार इस तरह की चीजें कहते रहेंगे तो ये बेसिकली आपकी अपनी इंटरनल एंग्जाइटीज हैं, इसका बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइल्ड हैज टू लर्न टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स. बच्चे ने बाहर जाना है, इंसेक्ट्स होंगे. हाँ, ये अलग बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सांप है तो आप उससे कहेंगे कि सांप के करीब मत जाओ, ये तुम्हें बाइट कर लेगा. और अगर आप बच्चा सांप के पास जाने लगे, उसको छूने लगे और पेरेंट खामोशी से खड़ा रहे क्योंकि वो ये समझे कि मुझे तो काम एंड क्वाइट रहना है, तो ऑब्वियसली वो भी दैट इज नॉट अ थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड. तो ये अंडरस्टैंड करना कि किस चीज, क्या चीज रैशनल है और क्या चीज इरैशनल है, इसकी जजमेंट पेरेंट कर सकता है और करनी चाहिए. The other thing is emotional regulation as a model for kids, separating realistic concerns from exaggerated. जब exaggerated fears है, जब हम उसको differentiate करने लगते हैं तो हमारी जो responses होते हैं वो automatically appropriate हो जाते हैं.
और जो भी पेरेंट्स कामनेस और कंस्ट्रक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करते रहेंगे, so the children would also learn how to manage emotions and face challenges resiliently. End of it is कि boundaries and consequences are the tools for connection. Basically boundaries or consequences जो हैं वो हमें they're not there to control the child, they're a tool of connection and for the child to learn. Parenting is not about perfection, it is about the presence, but not the physical presence, it's about the mental presence of a parent. And last of all, that your calm creates your child's calm. Now, these are the important points that everybody needs to remember. And that is the end of my presentation. And thank you very much, all of you, for joining and for your time. And yes. Yes, thank you so much, ma'am. Honestly, it was a really insightful session. I learned a lot of things. And I also have a question. Sure thing. Okay, so I wanted to ask कि आप देख रही हैं कि how the world is changing at a very, fast pace. हर दिन कुछ नया आ जाता है. How to deal with that? जैसे कि हमारे पेरेंट्स से उनको सोशल मीडिया का नहीं पता था, तो they didn't really know how to deal with children इस टाइम पर because Good उनको नहीं point. पता था सोशल मीडिया क्या है. तो अब Absolutely. आगे ऐसे बहुत सी चीजें आ सकती हैं जो हमें ना पता हो, और हमारे when we have children, they know about it but we don't have knowledge about that. तो how to deal with Absolutely. that, वहां पर हम कैसे aware और structured एक parenting करें. Absolutely. So this basically brings us back to the definition of parenting. See, the thing is, what I said earlier was that parenting, and like Piaget also said, that parenting is about societal norms. आपके cultural norms, हर एक के cultural norms फर्क होते हैं, आपकी society के norms फर्क होते हैं, और आपकी familial principles फर्क होते हैं, आपकी familial values भी फर्क हो सकती हैं. जो बेसिक वैल्यूज होती है ना वो सेम रहती हैं. आप सोशल मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया को अगर आप कहते हैं तो इट्स सो वास्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन इट. पर अगर आप उसी चीज को स्ट्रीम डाउन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इट्स जस्ट अ फ्यू बेसिक्स. ऐसी भी इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है, सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं. उसके अंदर पेरेंट ने इनकलकेट, पेरेंट को नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या होता है क्या नहीं होता, बट कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो वो बच्चे के अंदर इंस्टिल करके ये बता देता है कि दीज आर योर बाउंड्रीज. सो इररिस्पेक्टिव कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर या किसी भी, आप सोशल मीडिया को छोड़िए, आप किताबें ले लें, किसी भी चीज में देखिए हर तरह का कंटेंट होता है. आपकी वैल्यूज आपको क्या चीज सिखाई है, आप अपनी बाउंड्री को आपने आपने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, तो आप अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करेंगे. इट्स बेसिकली अबाउट दैट. Thank you so much, ma'am. Very well answered. मुझे समझ पे आ गया. And there is another question in the chat by Isa. Oh, okay. She says, when we set boundaries for children, sometimes they understand, but other times they seek more freedom. How can we maintain healthy boundaries while still allowing them to feel trusted and independent? Sorry. When we set boundaries for children, sometimes they understand, but other times they seek more freedom. How can we maintain healthy boundaries while still allowing them to feel trusted and independent? See, the thing is, अब now this depends upon the age of the child. हम boundaries की बात करते हैं कि जब बच्चा छोटा सा होता है, लेकिन irrespective, देखिए आपने किसी भी एज के ऊपर अभी आपको समझ आई, एज अ पेरेंट हमें अभी अंडरस्टैंडिंग हुई, हमने अभी से अपना काम स्टार्ट करना है, क्योंकि we're a parent ना. So long as we're parents, we have to do our parenting job. All right, the most important job in the world. इसका ये मतलब होता है कि जो बाउंड्री जब हम सेट करते हैं ना, तो उस पर हमें फर्म होना जरूरी होता है, तो हम कंसिस्टेंट पेरेंट बनते हैं, अवेयर पेरेंट बनते हैं. सो इररिस्पेक्टिव, ये जो इन्होंने बात की कि वी मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज, बाउंड्री होती है, ठीक है, वो हेल्दी अनहेल्दी नहीं हो सकती. जब हम वो जो 4 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज में बात करते हैं, जब हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं, तो बाउंड्री इज अ बाउंड्री. तो 2 थिंग्स दैट अ पेरेंट नीड्स टू रिमेंबर इज यू हैव टू बी फर्म ऑन इट. जब भी क्रॉस होगी तो कॉन्सिक्वेंस सेम हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि कॉन्सिक्वेंस एक दफा होगा, आप आईब्राउ रेस करते हैं, दूसरी दफा का कॉन्सिक्वेंस होगा आप चीखते हैं, तीसरी दफा कॉन्सिक्वेंस होगा आप थप्पड़ मारेंगे. इस तरह नहीं होता, कॉन्सिक्वेंस एक ही होता है. एंड इट डजंट हैव टू रिजॉर्ट टू कि आप जब तक थप्पड़ नहीं मारेंगे तब तक कॉन्सिक्वेंस ही नहीं नजर आएगा. कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है. कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है, बच्चे ने 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, उसको गुस्सा आया, उसने उठा के खिलौना दूसरे के ऊपर मारा, ठीक है. कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आइए आप
उसको बच्चे को जाके सॉरी करिए और उस टॉय को जाके वापस जगह पे रखिए, और तब तक आप नहीं खेलेंगे जब तक आप ये काम नहीं कर देते। अब बच्चे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो तो ये नहीं करना चाहता, लेकिन व्हेन द चाइल्ड डज इट, यू हैव टू मेक श्योर कि वो तब तक नहीं खेलेगा जब तक कि, और आप उसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप तो सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं, द चाइल्ड हैज टू डू इट। सो दैट इज what it is basically. I hope it answers your question, Iza Shamshad. Yes, Yes, is that ma'am. please? Okay, she says clear हो गया. All right. Okay, I have a question now. Yes, If please. am I audible? Sure Am thing. I audible? Yes, you're Okay. audible. So I was just thinking that हर बच्चे की ना साइकी एक जैसी नहीं होती, तो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब अब किसी को सोशल कंट्रोल कर देते हैं, सैंक्शंस वगैरह लगा लेते हैं, जैसे आपने बोला, या कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह सेट करते हैं। तो उसके बाद कुछ बच्चे मतलब रिबिलियन फील करते हैं, मतलब खुद को बागी फील करते हैं, या कहते हैं कि पेरेंट्स हमारी साइकी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, क्योंकि एक बच्चा है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस दूसरी किस्म की होगी, तो दूसरा बच्चा है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस दूसरी किस्म की होगी। तो पेरेंट इसके साथ कैसे डील कर सकता है? अब हर बच्चे की साइकी एक जैसी नहीं हो सकती, हर किसी के लिए जैसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे फिर? इसका ये आउटकम So होता my है। question is, जी बिल्कुल बताइएगा। yeah, you can go ahead. Fine. होता ये है कि देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चे की सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, सब चीज़ें ये होती है, पर माय पॉइंट इज कि जो कॉन्सिक्वेंस है ना वो हर दफ़ा सेम होना ज़रूरी है। जब बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस का ये पता लग जाता है ना कि दिस इज द बाउंड्री एंड दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, क्योंकि देखिए बाउंड्रीज तो बहुत लिमिटेड होती हैं, मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स हो रही होती है ना जो बच्चे कर रहे होते हैं, और हम यूजुअली चाइल्डहुड की बात करें, जब अर्ली इयर्स टू बेसिकली जो 0 to 6 years होते हैं ना, द मोस्ट क्रूशियल टाइम इन अ चाइल्ड्स लाइफ, और फिर वो कंसिस्टेंटली आगे तक जाते हैं। बच्चे को ना जब आप एक दफ़ा सेम कॉन्सिक्वेंसेज है ना जो आप बार बार करें, तो बच्चे को ये पता लग जाता है कि दिस बाउंड्री ब्रेकिंग इज गोइंग टू रिजल्ट इन दिस कॉन्सिक्वेंस। 2 times is 3 is the maximum that a child needs to learn कि this is what is going to happen. वो उसके बाद ये जो moods and tantrums and not respecting those or showing their big feelings because of those consequences, ये तब बच्चे करते हैं जब आपकी इनकंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपने कभी कॉन्सिक्वेंस अप्लाई किया और कभी आपने कॉन्सिक्वेंस नहीं अप्लाई किया, कभी आपको पता लगा कि ये बाउंड्री क्रॉस हुई है, कभी आपने इग्नोर कर दिया, या आप थके हुए थे, आपका दिल नहीं चाह रहा था इस वक्त बच्चे से बहस में पढ़ने का, या किसी भी रीजन की वजह से। तो ये जब भी इनकंसिस्टेंसी आती है ना, तो फिर ये जो बिग फीलिंग्स बच्चों की आती हैं ये हमें शो होना शुरू होती हैं। जब कंसिस्टेंसी होगी रूल्स के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, तो ये वाली प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और कॉन्सिक्वेंस कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। लाइक आई सेड कि कॉन्सिक्वेंस तो आपका वो होता है क्योंकि एजेंडा आपका एट द एंड ऑफ द डे बच्चे की लर्निंग है। हमारा ये नहीं एजेंडा कि उसको तकलीफ पहुंचे बच्चे को। So I hope it answers your question. I hope you were, because we understand. Okay, so I think the questions are done. For now, I've also shared the feedback form in the chat. Everyone can share the feedback. Also, thank you so much, ma'am, for joining us. It was really, really, really amazing. We learned a lot of things, and you even, made it interactive. Later on, we had to manage the time, so it couldn't be that interactive, but it was really, really inspiring and really informative. No And problem. thank you so much, ma'am. You're very welcome. And now we have our session with Dr. Shweta.